Hello viewers, welcome to my channel and thank you for watching the videos and subscribing the channel. इस वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का नेक्स्ट टॉपिक नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स डिस्कस करेंगे. लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स कहलाएगी if the orders of all the partial derivatives involved in the equation are not equal. अगर इक्वल हैं तो वो होमोजीनियस होगी, नॉट इक्वल हैं तो नॉन होमोजीनियस होगी. डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर माइनस डेल क्यूब जेड अपॉन डेल वाई क्यूब से प्लस डेल जेड अपॉन डेल एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई. सेकेंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर लीनियर, फर्स्ट ऑर्डर एंड दिस, सो राइट हैंड साइड ऑल्सो लीनियर. सो डेरिवेटिव्स आर ऑफ डिफरेंट ऑर्डर. अगर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है तो हम उसे रिड्यूस कर सकते हैं होमोजीनियस में या नहीं कर सकते हैं, बोथ केसेस होंगे. सो रिड्यूसिबल एंड इररिड्यूसिबल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दोनों सिचुएशन हो सकती हैं. रिड्यूसिबल किस केस में होगी? जब इक्वेशन जिसे हम एफ डी डी डैश के फॉर्म में लिखते हैं, and we can factorize f d d dash as linear factors. We can factorize f d d dash into linear factors. For example, d square minus d dash square is equal to d minus d dash into d plus d dash. Basically जो ये linear factors हैं that will be ad plus bd dash प्लस c के फॉर्म के होंगे, जहाँ की a b c कॉन्स्टेंट्स हैं. अगर हम एग्जाम्पल लें d स्क्वायर माइनस d डैश क्यूब, तो इसे हम लीनियर फैक्टर्स में नहीं लिख सकते हैं, तो नो लीनियर फैक्टर्स एंड इट इज इररिड्यूसिबल. अगर लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं तो रिड्यूसिबल, अदरवाइज इररिड्यूसिबल. एंड ये एग्जांपल है. अब एक थ्योरम देखते हैं. इफ द ऑपरेटर एफ डी डी डैश इज रिड्यूसिबल, द ऑर्डर इन विच द लीनियर फैक्टर्स अकर इज अनइम्पॉर्टेंट. जैसे ये एग्जाम्पल है, इसमें हम d प्लस डी डैश को पहले लिख सकते हैं बिकॉज इट इज मल्टीप्लीकेशन, सो कोई फर्क नहीं. अब जैसे कि हम जानते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन एंड पर्टिकुलर इंटीग्रल दो पार्ट हैं, तो अगर हमें सी एफ निकालना है, सी एफ ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स एफ डी डी डैश जेड इज इक्वल टू 0. राइट हैंड साइड कुछ भी है, अभी हम सी एफ फाइंड आउट कर रहे हैं, सो इसे 0 रखेंगे. बाकी इक्वेशन एफ डी डी डैश फॉर्म में इंटू जेड, ये जेड में इक्वेशन है, सो हम इसे लीनियर फैक्टर्स में लिख सकते हैं. एफ डी डी डैश इज इक्वल टू बी वन डी माइनस ए वन डी डैश माइनस सी वन, बी टू डी माइनस ए टू डी डैश माइनस सी टू एंड सो ऑन. सो नाउ राइट हैंड साइड वी कैन राइट इन जनरल फॉर्म, सो इट विल बी, so f d d dash we have written in the form of linear factors where a b c are constants, and we can write this in general form br d minus ar d dash minus cr z is equal to 0. r may take values 1 to n. let's mark it a. इक्वेशन a का सॉल्यूशन, कोई भी सॉल्यूशन होगा जब हमने लीनियर फैक्टर्स के फॉर्म में एफ डी डी डैश को राइट किया है. सो एनी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन ए इज ए सॉल्यूशन ऑफ बी वन डी माइनस ए वन डी डैश माइनस सी वन बी एन डी माइनस ए एन d dash minus cn z is equal to 0. a can be rewritten as br dz minus ar d dash z minus cr z is equal to 0. we write it as b. r is taking values 1 to n. तो ये इक्वेशन लैग्रेंजे फॉर्म की हो गई. अगर हम इसे लिखें बी आर पी, बिकॉज दिस इज p and this is q. partial derivative with respect to x and partial derivative with respect to y.
minus ARQ is equal to CRZ, Lagrange's equation. So हम Lagrange's auxiliary equation लिख सकते हैं, dx upon br is equal to dy upon AR with minus sign is equal to dz upon CRZ. फर्स्ट एंड सेकंड टर्म लिया, फर्स्ट एंड सेकंड फ्रैक्शन एंड इंटीग्रेट किया लेकर के, सो दिस बिकम्स माइनस AR dx is equal to BR dy. So integrating we get ARX plus BRY, because this is minus so this will become plus, is equal to some constant C1. एंड अगर फर्स्ट एंड थर्ड लें, थर्ड टर्म और फ्रैक्शंस, सो दिस विल बी dx इंटू CRZ इज इक्वल टू BR dz. इंटीग्रेट किया, सो दिस बिकम्स, this we take in this upon this CR dx is equal to BR dz upon z. So integration gives CRX is equal to BR log z plus log, so CRX is equal to this much. So log z find out कर सकते हैं, log z is equal to CRX upon BR, and this is also divided by log C2 upon BR. This is new constant C dash or C2 dash, so this is CRX upon BR minus C2 dash. If we make, then it is plus C2 dash. So we can write Z is equal to, say, C2 dash e to the power CR upon BR x, and BR is not equal, provided this is not equal to 0. So this is from first and third term. We may find Z from second and third term also. So from second and third term we write by observing this, Z is equal to C2 say double dash e to the power minus CR upon AR y. AR is not equal to 0. So general solution of f d d dash z is equal to 0 is, z is equal to e to the power CR upon BRX into phi BRY plus ARX. This we got from first and second terms, and similarly we have clubbed this one along with the second. When we take the last one and this one, we get the solution of first and second and third. It comes Z is equal to e to the power minus CR upon AR y psi R BRY plus ARX if AR is not equal to 0, and where phi R and psi R arbitrary functions. The general solution of the equation B is the sum of the solutions of the equation of the form A corresponding to each factor of FDD dash. Now we take case of repeated factors. Now if factors are or root factors are repeated, so in this case we take one factor, that is BD minus AD dash minus C. This is say repeated 2 times, so equation will be BD minus AD dash minus C, BD minus AD dash minus C is equal to Z is equal to 0.
So we take this term as v. So this becomes bd minus ad dash minus c into v is equal to 0. Now we can write down this term, and this gives bd minus ad dash minus c z is equal to v. We can write this equation left hand side as bp minus aq minus c z is equal to v. So this is bp minus aq is equal to cz plus v, Lagrange's equation. अब इसकी auxiliary equations निकाल लेते हैं. Lagrange auxiliary equations are dx upon b is equal to dy upon minus a is equal to dz upon cz plus v. तो इसका लिए हम क्या करेंगे, दो दो टर्म्स को इंटीग्रेट करेंगे, these two. So this becomes minus a dx is equal to b dy. इंटीग्रेट किया, a minus ax is equal to by plus c1. So ax plus by is equal to c1 कह सकते हैं हम. This is c1 dash, so c1 minus sign is. And second will be, we will take another two, dy and dz, as we did in the previous. Here also we had got by plus arx, so by plus ax. And then we take another one, we get this one. 1 in the case of x here, and another, this is y. So we can write similarly as above. We can write v is equal to e to the power c upon b into x phi. This is from here ax plus by if b is not 0. And another is v is equal to e to the power minus, like we did earlier, c upon ay, another function psi by plus ax, same thing, by plus ax, order a is not equal to 0. This is the form of v, but we need to find out z. So we put these values in the above equation. Here we put value of v in this equation. bd minus ad dash minus cz is equal to e to the power c upon b y phi by plus ax. The first one, now we can rewrite it, bd minus ad dash, we take cz on another side and this term as it is. So this is again Lagrange's equation, and we can write this is bp minus aq is equal to this term cz plus e to the power c upon b x phi by plus ax. We can write auxiliary equations, dx upon b is equal to dy upon minus 2 dz upon cz plus e to the power c upon b x phi by plus ax. Take the first two, it gives a dx minus sign is equal to b dy. Integrate ax plus by is equal to, say, lambda 1. Lambda 1 is arbitrary constant. Now we take first and third term, then this gives dx upon b is equal to dz upon cz plus e to the power c upon b x phi by plus ax. So we can write this as dz upon dx. This will be linear equation, ordinary differential equation. Now this term, because we have taken, so minus c upon b z is equal to 1 upon b e to the power c upon b x phi by plus ax. So we cross multiply, we check, this dx will come here, so that is correct according to the expression. Cross multiply, and if we see here
c will be multiplied by dx. So this is correct equation. Now by plus ax is lambda 1. Here we can write down lambda 1. So this becomes 5 lambda 1. So equation is dz upon dx minus c upon b z is equal to 1 upon b e to the power c upon b x 5 lambda 1. This is ODE. So integrating factor is e to the power minus c upon b x dx. So z into e to the power minus c upon b x is equal to integral 1 upon b e to the power c upon b x 5 lambda 1 into e to the power minus c upon b x dx. So we see these terms, they cancel out. Only thing 1 upon b 5 lambda 1 dx is remaining. So z e to the power minus c upon b x, the integration of this will be minus x upon b 5 lambda 1 and the constant of integration c. Now in place of lambda 1 we can write by plus ax c upon b x minus x upon b 5 by plus ax is equal to c, where c is arbitrary constant. So now general solution, when we are taking this solution, this one, we can write down when we take the original equation where two repeated factors were there, bd minus ad dash minus c, and again same term z is equal to 0, that equation and this equation which we have taken in terms of x. When we take these two, the general solution comes. Rule for finding CF and CF of reducible means जिस इक्वेशन को हम फैक्टर्स में, लीनियर फैक्टर्स में रिड्यूस कर सकते हैं. नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स. तो जैसे कि हम गिवन इक्वेशन को लेते हैं एफ डी डी डैश z इज इक्वल टू एफ एक्स वाई. सो फर्स्ट स्टेप, एफ डी डी डैश को लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लीजिए. So we factorize f d d dash into linear factors. Then we have two cases, repeated and non-repeated factors. So rule 1, corresponding to each non-repeated first is non-repeated factor f d minus a d dash minus c. We can find CF. The CF is taken, as we know we can take two forms of this CF. So first we will take in the terms of x e to the power c upon bx, and in second we will take e to the power minus c upon a y. So and in both cases we will take repeated and non-repeated. So it means in total 4 cases will arise. This is when we are trying to find out CF of non-repeated factor. Then we are taking CF as e to the power c upon b x phi by plus ax. B is not equal to 0. Now in this 3 cases arise. First, C is equal to 0. Second, A is equal to 0. And third is A is equal to C is equal to 0 and B is equal to 1. ये 3 केस
हम चारों सिचुएशन में लेंगे जबकि ये फैक्टर नॉन रिपीटेड है, r टाइम्स रिपीटेड है और हम इस तरह का सॉल्यूशन ले रहे हैं CF का. दिस इज CF. और सेकंड, जब हम इंस्टेड ऑफ e टू द पावर c अपॉन b x की जगह हम लेंगे e टू द पावर माइनस c अपॉन a y, उस केस में भी हम दो केस लेंगे, रिपीटेड एंड नॉन रिपीटेड, एंड देन फिर ये तीन केसेस अराइज होंगे. सो फर्स्ट इज c इज इक्वल टू 0. इट मीन्स हमारा जो लीनियर फैक्टर है वो हो गया बी डी माइनस ए डी डैश, क्योंकि c 0 है. तब इस केस में जो CF है वो रिड्यूस हो जाएगा e टू द पावर c 0 होने से ओनली फाई by प्लस ax हो जाएगा. एंड ऑफ कोर्स b इज नॉट 0. जब a 0 है उस केस में फैक्टर हो जाएगा bd माइनस c. फैक्टर इज नाउ bd माइनस c. इस केस में CF होगा e टू द पावर c अपॉन b x फाई by ओनली. a इज 0 एंड यहाँ पर ac 0 b1 है, तब ओनली फाई y बिकॉज रेस्ट ऑफ द टर्म्स आर 0. तो CF इज दिस मच ओनली. अब यही सिचुएशन हम रिपीटेड के लिए करें. रूल 1A कह देते हैं एंड रूल 1B. जबकि BD माइनस AD डैश माइनस C टू द पावर R है, ये रिपीटेड फैक्टर्स हैं. इस केस में CF होगा e टू द पावर C अपॉन B x, जैसे कि हमने पहले देखा था 2 में फाई 1 by प्लस ax प्लस x फाई 2 by प्लस ax प्लस x स्क्वायर फाई 3 by प्लस ax etc. So this will be phi 1 by plus ax plus x phi 2 by plus ax etc. up to x to the power r minus 1 phi r by plus ax. b is not equal to 0 if. so ये CF की फॉर्म हो गई. अब इसमें हम तीन केस लेते हैं. फर्स्ट इज c is equal to 0, second is a is equal to 0 and third is a is equal to c is equal to 0 and b is equal to 1. तो जो सॉल्यूशंस आएंगे वो होंगे फर्स्ट केस में when c is 0 the first this term will be 1. So remaining CF is phi 1 by plus ax plus x phi 2 by plus ax etc. up to x to the power r minus 1 phi r by plus ax. b is not equal to 0 if a is 0. it means e to the power cx upon b c upon bx whatever, then phi 1 by bracket plus x phi 2 by plus x r minus 1 phi r by and b is not equal to 0. So this is the case. Now third, when ac is 0 and b is 1, so this becomes e to the power 0 which is 1 and inside this phi 1 y b is 1 plus phi 2 x into phi 2 y plus x square phi 3 y and so on x r minus 1 phi r y and b is already 1. तो वो कंडीशन नहीं है. b is not equal to 0. b is not equal to 0 है because we have taken 1 already. So this will be 1. So ये हमारे तीन केसेस हो गए.
अब हम जनरल सॉल्यूशन लिख सकते हैं. द जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन क्या है? बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी, बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी जेड. ये रिपीटेड रूट है तो ये हो गया. इसे हम ए से डिनोट कर देते हैं. एंड अगर हमने फर्स्ट एंड थर्ड फैक्टर लिया था उस केस में बी डी माइनस ए डी डैश z इज इक्वल टू सी जेड प्लस ई टू द पावर सी अपॉन बी एक्स फाई बी वाई प्लस ए एक्स. इस केस में इफ b इज नॉट इक्वल टू 0. ये b इक्वेशन है. तो a एंड b का जो जनरल सॉल्यूशन है दैट कम्स z e टू द पावर माइनस सी अपॉन बी एक्स माइनस एक्स अपॉन बी. ये अभी हमने लास्ट पेज पे किया है. बी वाई फाइव बी वाई प्लस ए एक्स इज इक्वल टू 5 बी वाई प्लस ए एक्स. और हम इसे दूसरे फॉर्म में लिख सकते हैं. z इज इक्वल टू e टू द पावर c अपॉन बी एक्स 5 बी वाई प्लस ए एक्स प्लस एक्स. ये 1 अपॉन बी को इसमें ले जाते हैं. दिस बिकम्स 5 तो ये टर्म इधर आई एक्स 5 बी वाई प्लस ए एक्स इफ बी इज नॉट इक्वल टू 0. सो ये जनरल सॉल्यूशन हो गया इन केस वी हैव टेकन सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ एक्स. अगर हम सेकेंड एंड थर्ड टर्म को लेकर के फैक्टर को सॉल्व किया उस केस में आया था बी डी माइनस ए डी डैश z इज इक्वल टू सी जेड प्लस ई टू द पावर माइनस सी अपॉन ए वाई बी वाई प्लस ए एक्स इफ a इज नॉट इक्वल टू 0. इसे हम c से डिनोट कर देते हैं. अब a एंड c का सॉल्यूशन देना है तो इन दो को हम सॉल्व करते हैं. तो जैसे पहले लिखा है उसी के आधार पर सिमिलरली वी कैन राइट डाउन z इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस c अपॉन a y psi 1 बी वाई प्लस ए एक्स प्लस y psi 2 बी वाई प्लस ए एक्स इफ a इज नॉट इक्वल टू 0. अगर हम लें कि फैक्टर्स जो हैं r टाइम रिपीट हो रहे हैं, इफ फैक्टर इज रिपीटेड r टाइम्स, तो हम लिख सकते हैं z इज इक्वल टू ई टू द पावर c अपॉन बी एक्स सिग्मा. अब समेशन लेना है. i इज इक्वल टू 1 टू r टाइम्स रिपीट हो रहा है x टू द पावर i माइनस 1 फाई आई बी वाई प्लस ए एक्स इफ b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड z इज इक्वल टू ई टू द पावर c अपॉन a माइनस y सिग्मा i इज इक्वल टू 1 टू r वाई आई माइनस 1 साई आई बी वाई प्लस ए एक्स इफ a इज नॉट इक्वल टू 0. एग्जाम्पल करते हैं इसके ऊपर. पहला एग्जाम्पल है डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी डैश स्क्वायर प्लस 2ab डी प्लस 2a स्क्वायर बी डी डैश z इज इक्वल टू 0. सो पहले इसको फैक्टराइज करते हैं लीनियर में. सो दिस कैन बी डन d माइनस ए डी डैश d प्लस ए डी डैश एंड यहाँ से अगर हम 2ab कॉमन लेने तो सो दिस इज d प्लस ए डी डैश z इज इक्वल टू 0. अब इसमें से ये कॉमन ले लिया d प्लस ए डी डैश एंड d माइनस ए डी डैश प्लस 2ab. अब ये जो है फैक्टर्स हो गए लीनियर और इसे कंपेयर हम कर सकते हैं बी डी माइनस ए डी डैश माइनस सी से. नॉन रिपीटेड हैं ये. तो b इस केस में b इज 1 a इज माइनस a एंड c इज 0. इस केस में b इज 1 a इज a एंड c इज माइनस 2ab. तो जो हमने रूल्स पढ़े उसके अकॉर्डिंग हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखते हैं. सो दिस इज 5 बिकॉज c 0 x के फॉर्म में हम लिख रहे हैं. सो e टू द पावर c अपॉन
bx, so that will be 1. by means y plus ax means minus ax, so minus ax. Next is from here we take, that will be addition, sum of them we have to do. So in this case it is e to the power c upon a, c upon bx, so minus 2ab upon 1x phi 2, y b is 1, so y plus ax. so ये सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल है r प्लस 2s प्लस t प्लस 2p प्लस 2q प्लस z इज इक्वल टू 0। इस केस में जैसे कि हम जानते हैं डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस 2 डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर z अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस 2 डेल z अपॉन डेल एक्स प्लस 2 डेल z अपॉन डेल वाई प्लस z इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है। सो इसे हम लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 2d d डैश प्लस d डैश स्क्वायर, बिकॉज डेल z अपॉन डेल एक्स इज d एंड डेल z अपॉन डेल वाई इज d डैश, प्लस 2d प्लस 2d डैश प्लस z, एंड वी कैन टेक 1 हियर एंड देन कॉमन इज इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज करते हैं, तो दिस कैन बी रिटन एज d प्लस d डैश होल स्क्वायर, और यहाँ से हम 2 कॉमन ने, सो d प्लस d डैश प्लस 1 z इज इक्वल टू 0। इट मीन्स हम इसे लिख सकते हैं d प्लस d डैश प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये रिपीटेड फैक्टर्स आ गए। CF हम लिख सकते हैं, पहले इसे कंपेयर करते हैं BD माइनस C माइनस AD डैश माइनस C से, सो वी गेट B इज 1 एंड A is minus 1 and C is minus 1. So we get the solution. X के फॉर्म में solution लिख रहे हैं e to the power minus C, that is minus 1 upon B into X minus C, it is e to the power, so CF is e to the power C upon C is minus 1 upon B is 1 into X phi 1 by y minus X, और क्योंकि ये 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है प्लस एक्स फाई 2 एंड दिस विल बी आउटसाइड y माइनस, सो ये आंसर हो गया e टू द पावर माइनस एक्स फाई 1 y माइनस एक्स प्लस एक्स फाई 2 y माइनस एक्स। सो अब हम फाइंड आउट करते हैं इरिड्यूसिबल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स, जहाँ पे f d d डैश के लीनियर फैक्टर्स नहीं कर सकते हैं, उस केस में हम CF फाइंड आउट करते हैं।